जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आप लोग सेक्शन ए के हैं कि सेक्शन ई के? एक है सर। सेक्शन ई भी है सर। सेक्शन ए। हाँ, दोनों एनीबॉडी है फ्रॉम सर। सेक्शन ई के लड़के हैं? यस सर। एनीबॉडी फ्रॉम सेक्शन ई? यस सर। ओके, अच्छा, मुझे मैसेज मिला है कि लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा, बट एनीवे इफ यू आर हियर सो फिर वो थोड़ा सा इंडिविजुअल मसला होगा। ओके, नहीं सर, लेट अस। वो जी जी। कॉपी करके पेस्ट किया है सर। डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा था सर। डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा? यस। क्यों? मैं तो इसी तरह ही करता रहता हूँ, इसमें तो कोई चलो मैं भेज देता हूँ सर, मैं भेज मेरा किया ख्याल सर। इशू नहीं है। ओके, एनीवे अगर कोई मसला है तो एक बंदा जो है ना पेस्ट कर कॉपी करके वहां पे सेंड कर दे स्टूडेंट्स को, ठीक है, सेक्शन ई के स्टूडेंट्स को। ओके सर। Okay, let us start today's lecture. And if you remember, we were here previously. We left with the aircraft engine, right? So यहाँ थे हम, क्या नहीं ये पढ़ा था? नो सर, ये नहीं पढ़ा था। Okay, so today we are discussing about aircraft engines. Okay, a little bit. As I told you, we will be discussing this thing a little bit in chapter 10 when we will be, talking about jet propulsions. But since these topics are here, so we can discuss it here now. Okay, this one is a turbojet engine, right? With the TS diagram that is presented here. So the aircraft engine that we discussed in our previous class, okay, and the schematic is like this. That is basically your turbojet engine, okay. This one is your turbojet engine, the lift one, right? So the working principle is the same, okay. So if you look at the flow diagram, okay, that is here, this one. If you look at the flow diagram, what happens is that the air comes to the compressor and it is compressed, right? And it is then given to the combustion chamber as we discussed earlier. And the air at state 3 is here, okay? So the enthalpy is basically changed from H1 to H3, right? And then the enthalpy drop, okay, or this decrease in enthalpy, that is your H3 minus H4. This is the useful work produced by this turbine, okay. And rest of this, the exhaust, it is not thrown directly to the atmosphere, rather it is passed through the nozzle. Now here, like if you talk about the turbine expansion takes place, there is a pressure reduction, okay. This decrease in pressure is basically your expansion process, and here also the expansion takes place, right? But here, due to pressure drop, the work is produced, the thermodynamic work is produced. And you know what is the definition of thermodynamic work, right? That is basically used for lifting or lowering of a weight. But here the pressure drops, okay, but there is no thermodynamic work involved here. And the reason is very obvious, because here only the working fluid or the exhaust is accelerated in the nozzle, okay. So if for example here you are having the pressure P1 and this velocity V1, so at exit you will be having pressure P2 and velocity V2, and the exit velocity or the jet velocity will be greater than V1. Why? Because due to this conduit or this duct or the shape of this duct is responsible to increase the velocity and decrease the pressure, right? So this is basically the higher the velocity of jet leaving the nozzle, as a result and as a reaction, thrust will be produced in the forward direction, which will give
some velocity to the aircraft, and that is basically your thrust. That is, if the thrust is produced in this fashion, this type of aircraft engine is basically known as turbojet engine. You can see the word jet, and jet is basically from this one. That high velocity jet leaves the nozzle with and as a reaction the thrust is produced in the forward direction. So that is basically your turbojet engine. If you look at the TS diagram, the entropy temperature diagram, so 1 to 2 is your compression process inside the compressor, and 2 to 3 is heat addition, that is in the combustion chamber, right? And then 3 to 4 is the expansion process in the turbine, that is producing work which is utilized by the compressor. And rest 4 to 3 is also expansion process, but this expansion is inside the nozzle. It is not producing any thermodynamic work, but it is used to, or this expansion is used to, produce a thrust in the aircraft, for the aircraft, right? And then again 5 to 1 is heat rejection to the atmosphere. ठीक है, so यहाँ पे आपके पास you see this H3 minus H4, this one H3, wait, this H3 minus H4, right? Or you can say CP T3 minus T4. This is the work produced by the turbine and subsequently utilized by the compressor, and this is the thrust produced. Okay, so this is basically the in this way the thrust is produced in the turbojet engine, right? The turbojet engines are used for high speed or high velocity, you can say, and they are also used for high altitude. Okay, so this is the property, and you can say the advantage of the turbojet engine, that they are used for high altitude and high speed, right? Okay, and if you look at the schematic diagram, तो वहां पे आपके पास क्या होगा? You can see here the same way, right? As it is shown in the flow diagram, the air comes to the compressor and it is compressed, and then combustion takes place, and then it is expanded in the turbine, high pressure and low pressure, for example, subsequently. Then instead of giving the exhaust directly to the atmosphere, we are basically having a nozzle over here. ठीक है, इस तरह का एक nozzle होता है, right? And this nozzle is basically used to accelerate this exhaust, and the velocity that is leaving this nozzle will be obviously very high, and that jet velocity as a reaction is basically producing a thrust in the forward direction. ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास thrust production होती है, right, in the forward direction. If you remember, मैंने आपको बताया था कि when the aircraft lands, ठीक है, so it is still having too much speed, right? So it is not very easy to apply brakes over there, जो conventional brakes होते हैं, तो वो brakes भी जो है ना apply होते हैं, but at the same time we have actually air brakes over there. हमारे पास जो एयर फ्रेम है उसके कुछ पार्ट्स जो है वो भी यूज होते हैं to decelerate the aircraft. But the other thing and the important thing is the operation of thrust reverser. There is actually a component in the aircraft engine that is known as thrust reverser. That is a complex thing, but let me draw its a simple diagram. The thrust reverser is like this. Okay, when the thrust reverser operates, आपने किसी ने अगर इसको एक्सपीरियंस किया है तो बहुत तेज सी आवाज आपने सुनी होगी. तो ये thrust reverser इस तरह होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बंद इस तरह ऐसे thrust reverser होता है. So instead of giving exhaust in the rearward direction, what happens is कि आपके पास thrust reverser के ऑपरेशन के साथ the this exhaust is moving in this direction. ठीक है, इस direction में ये exhaust move करता है, and same is the case over here also. All right, so the exhaust, instead of leaving the nozzle in the rearward direction, now it is actually moving in the forward direction. So obviously as a reaction there will be a force applied on the engine and consequently on the aircraft in the reverse direction. And you know very well that if a force is applied in reverse direction to the motion of the aircraft, that is basically the brake. ठीक है, तो ये इस जहाज जो है ना इस तरीके से आसानी से रुक जाता है. That is basically the thrust reverser, right?
ये हर एक इंजन में होता है, चाहे टर्बोजेट Okay, हो या sir. आपके पास। Hello. Sir, disconnect show. जरा दी मालूमात नक्की की जम नेट की मसाला भी कैसा जी मसाला भी ना हो गया फिर रबिश। हेलो, जी 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 sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है सर। जी, एम आई ऑडिबल? अच्छा, यस ये सर। कॉल आ गई थी तो दरमियान में, यस तो सर। फिर वो डुअल काम नहीं करता था इसलिए, राइट? ओके, सो Yes, आई थिंक it got disconnected. okay, so this is about the turbojet engine, and if you look at the turboprop engine, so the propulsion mechanism is a bit different, right? And that is, here conventionally the air is compressed to state 2, and then the combustion takes place, and we have high temperature, high pressure gases, and when they expand in the turbine, we have exhaust over here, right? So the work is produced by this turbine, but instead of giving this exhaust, okay, to the nozzle, we are just throwing it into the atmosphere in open cycle, and the propulsion, okay, or the thrust that is produced by introducing the idea of having a propeller in front, okay. तो ये आपके पास एक प्रोपेलर होता है। प्रोपेलर बेसिकली क्या करता है कि it pushes the air, it rotates and pushes the air in the rearward direction, right? And as a result, the thrust आपके पास जिस तरह हमारे पास नहीं होता फॉर स्विमिंग पर्पसेस, ओके, फॉर फ्लोटिंग पर्पसेस, तो इसी तरीके जो है ना, and as a result a thrust or force is produced in the forward direction and we can move in forward, okay. So the same way this propeller pushes the air in the rearward direction, and the thrust is produced in the forward direction, which gives certain velocity to the aircraft, okay. So that is, अच्छा, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, this turboprop engines, they are used for low altitude and for low speeds, and the reason is very obvious. Why for low altitude? Because if you go up, okay, at high altitudes, so the density of air decreases, okay. तो density of air जो है ना decrease करता है, तो आपके पास इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो it is not efficient to use this for high high altitude. इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह आप स्विमिंग करते हैं ना इन द वाटर, अगर उसी तरीके से जो है ना आप अपने हाथों को हिलाए स्विमिंग करें, बट इन द एयर, तो उतनी थ्रस्ट, उतनी पुश आपको नहीं मिलती। व्हाई? बिकॉज द मीडियम ओवर देयर, दैट इज द वाटर, इट इज डेंसर, इट इज डेंस देन द एयर,
So same is the case over here also. तो इसलिए जो है ना high altitude के ऊपर इसको use नहीं किया जाता. The second thing is it is not recommended for higher speeds also, and the reason is that for higher speeds you need to rotate this with a high RPM, right? And if you rotate this with high RPM, then vibration and chatter is there, and the shock wave produces. The shock wave basically it is due to irreversibilities, and instead of producing forward thrust, it is producing rear. The thrust in the rearward direction, okay, or reverse thrust. So for that reason, it is not used for high altitude and for high speeds. And if you remember these two are not mounted on the same shaft, right? If you remember, we discussed about this thing in the gear train, that the RPM, the speed of this turbine and compressor, they are in thousands, okay, in 3,000, 4,000, 5,000, but you cannot rotate this propeller with the same speed. And the reason I told you, okay, even it can break the blades of this propeller if you rotate this with very high RPM, right? So for that reason, there is a reduction gearbox installed over here that reduces the speed of the shaft, okay, and rotate this propeller at a reduced speed. Okay, so ये जो है ना, if you are producing a thrust in this sort of mechanism by introducing the idea of propeller, this is known as turboprop engine. आपने देखे होंगे PII के पास जो है ना, जो ATR 42 जो एयरक्राफ्ट हैं for 48-50 पैसेंजर, एंड सिमिलरली C-130 एक जहाज है कार्गो मिलिट्री का, तो ये दोनों जो है ना टर्बोप्रॉप इंजन्स के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, इफ यू लुक एट द TS डायग्राम, so 1 to 2 is the compression process, 2 to 3 is the heat addition process, and 3 to 4 is the expansion process. Okay, and what will be the network output? You can very much see this is the work of the turbine, and if you subtract the work of the compressor, that is CP of air, this is air and this is gas, right? You can see specific heat at constant pressure for gas, and this is for air. So this will be your network output, right? There is also another type of aircraft engine that is known as a turbofan engine, right? That is what? That is your turbofan engine. So that turbofan engine is basically, it is it is used to overcome the limitations of these two engines. Okay, in the turbojet engine the efficiency is low, and in the turboprop engine, as I told you, that it is not recommended for high speed and high velocity. So up there we have turbojet engine for high velocity and high altitudes. Down there we have turboprop engine, and in between these two we have basically this turbofan engine. And turbofan engine, it is having it is producing thrust in a very delicate manner. And if you look at the second or first slide, so you will see that we have a turbofan engine here. ये आपके पास turbofan engine है, ठीक है? इसमें होता क्या है कि you see here that we have a fan in front of the compressors, ठीक है? So if you see the diameter or the span of this fan, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है. And then we have the conventional compressor, low pressure, high pressure, combustion chamber, high pressure turbine, and low pressure turbine. ये जो मैं मार्कर यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है? This is basically your conventional gas turbine power plant, gas turbine engine. And in front of that we have actually a fan over here. So if this is the cutaway section, if I complete it, okay, so it is something like this, okay? It is something like this, right? So what happens is, let's say for example, if we have 100 kg per second, या 100 units of air that is coming here, okay, so that 100 units of air is not directly going to this compressor, right? So it depends on the bypass ratio. A term is used that is known as bypass ratio, okay? High bypass ratio, low bypass ratio, ये जो है ना हमारे पास एक terminology है. What do you mean by this bypass ratio? Let's say for example, it depends on engine, okay? We have actually 1090, 2080, 40-60, 50-50 bypass ratio engines are available. But let's say for example, here 30% of the air out of 100, it is coming here, and it takes part in the conventional, compression process, combustion process, and then expansion process in order to produce work, okay? And the exhaust will be delivered here,
right? And rest of 70% of the air, it is just bypassed. Okay, it is not taking part in this conventional gas turbine process. It is just bypassed. Okay, and due to this, it comes here and it is mixed with the exhaust. And if you look at this shape, okay, this is basically a nozzle. Okay, so just by introducing the idea of this nozzle shape, this exhaust plus the bypassed air that are actually here, it is leaving the nozzle, with high speed, and the jet velocity is more. Okay, or the jet is leaving this nozzle with higher velocity, and as a result and as a reaction, a thrust will be produced in the forward direction. So if this sort of mechanism is used to produce thrust in the engine, this type of engine is known as a turbofan engine, right? So if you see here, since 70 or 80 or 60% air is bypassed, and the shape of this cowling or this conduit is used to produce thrust, it is not taking part in the this combustion process. So आपको पता है कि इतना जो है ना, फिर हम फ्यूल जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा आपका, और इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और थ्रस्ट जो है ना आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा. सो हमारे पास जो है ना 90% बाईपास रेशो के जो है ना इंजन मौजूद है. 10% ऑफ द एयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. अच्छा, ये भी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द थ्रस्ट, so you can use this 10-90 bypass ratio engines. Why? Because this 10% of the air will be used and the work produced will be less. You can see here. Okay, तो इसलिए जो है ना, it depends कि कितना आपको thrust चाहिए, कितना आपको पावर रिक्वायरमेंट चाहिए. तो यू कैन प्रोड्यूस द थ्रस्ट मोस्टली बाय पासिंग द एयर. ठीक है सर जी, ये फैन और प्रोपेलर में क्या फर्क है सर? फैन और प्रोपेलर में एक तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना फर्क है, दूसरा जो है ना इसकी एक्सपोजिशन के लिहाज से फर्क है. द प्रोपेलर इज एक्सपोज्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, और जो फैन आपके पास होता है ना, इट इज नॉट डायरेक्टली सराउंडेड बाय द एयर. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली इन अ क्लोज कंड्यूट एब्रेडेबल. ये आपके पास जो है ना, ये क्लोज कंड्यूट में होता है. ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर. दूसरा ये है कि उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है. दैट प्रोपेलर इज पुशिंग द एयर इन द रेडवर्ड डायरेक्शन, और उससे जो है ना आपको थ्रस्ट मिलती है. यहाँ पे उस तरह नहीं मिलती. दे आर यूजिंग द आइडिया ऑफ नोजल. ठीक है, तो ये फैन भी अगर एयर को बाईपास करता है ना, तो डायरेक्टली पुश नहीं करता इनटू द एटमॉस्फेयर, जस्ट इन द केस ऑफ प्रोपेलर, बल्कि इसको नोजल को देता है. ठीक है, एंड इट इज इवन मिक्स्ड विद द एग्जॉस्ट, जो कि ये चीजें जो है ना हमारे पास टर्बोप्रॉप में नहीं है. तो इसलिए जो है ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टर्बोफैन. समझ आ गई? सर ये वाला इंजन हमारे डिपार्टमेंट में भी है मेरे ख्याल में. पहले था, ये वाला नहीं है, वो डिफरेंट है. वो दूसरा है अब्दुल सलाम, वो दूसरा है. ये इस तरह का नहीं है. ठीक है, दैट वाज एक्चुअली गैस टर्बाइन इंजन, बट वेरी ओल्ड वन. ठीक है, तो हमारे पास फोकर टाइप के एयरक्राफ्ट होते थे जो कि अभी ग्राउंडेड है, उसकी प्रोड्यूस होते थे. ठीक है, वो इंजन आजकल यूज नहीं हो रहे. ठीक है, ओके. एनीवे, देन आफ्टर दैट we have this thing about parallel flow units. तो parallel flow units का क्या मतलब है और उसको यूज करने की जरूरत क्या है? तो that is basically, you see here, I told you in the topic of using the power turbine that if you want to make the turbine that is producing work for the compressor independent of the turbine that is producing a useful work, तो उसके लिए जो है ना फिर हम क्या करते हैं कि we actually have the idea of use of the power turbine. Now what parallel flow unit is doing basically is basically this is doing if the power requirements from this turbine 1 and turbine 2 they are different, right? So obviously you need to use two combustion chambers. So in the same way the air is compressed, okay, and the same compressed air, a bleed is given to combustion chamber 1 where the combustion takes place.
heat is added to the compressed air based on the requirement from this turbine. कितना आपने heat add करना है, it depends on कि कितना power जो है ना आपको required है. And then after that, the same bleed is given to combustion chamber 2, and you can add heat and you can have the combustion over here, fuel, spray fuel over here according to the requirement of this turbine 2, right? So they are independent of each other. Let's say, for example, the requirement of this turbine T1 is to produce X amount of work. Okay, so you can use a proper combustion over here, and you can use this much heat addition. But here the requirement is, let's say, Y units. Okay, so you can have the combustion over here accordingly. If the requirement varies from Y to, let's say, Z, okay, so you can control your combustion over here accordingly. So they are basically independent of each other, and they are operating in parallel manner. So for that reason, this type of gas turbine is known as parallel flow units. ठीक है, इसकी समझ आ गई? हमें जरूरत पड़ती है इसकी कभी कभी, राइट? सर ये पैरेलल फ्लो यूनिट का फंक्शन एक बार दोबारा बता दें. पैरेलल फ्लो यूनिट का फंक्शन ये है ना कि आपके पास टरबाइन T1 और टरबाइन T2 की अगर पावर रिक्वायरमेंट्स, पावर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा चलिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा ये आसान होगा. दिस वन, लुक, यहाँ पे यू हैव जस्ट यूज द आइडिया ऑफ पावर टरबाइन. ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, राइट? But we are using a single combustion chamber. So yes, the work produced by this high pressure turbine is your H3 minus H4, right? And that is utilized by the compressor. Here the enthalpy available to low pressure turbine is what? Is this is your H4. So H4 minus H5, okay? This will be the work produced by pressure turbine. Now, if you want to increase this work, your power requirement, तो फिर आप क्या करेंगे, राइट? अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंबशन जो है ना वो इंक्रीज करेंगे, फ्यूल स्प्रे, इन अदर वर्ड्स हीट एडिशन इंक्रीज करेंगे. ठीक है, फॉर दिस वन ओनली रिक्वायरमेंट इसकी सिर्फ चेंज हुई है, नॉट फॉर दिस वन. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप एक कंबशन चेंबर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपने हीट एडिशन ज्यादा करनी होगी. ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, वी नीड दिस एंथैल्पी टू बी मोर, बट अनड्यू यहाँ पे भी आपके पास ज्यादा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज नॉट द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो इसलिए जो है ना फिर हम क्या करते हैं कि वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ दिस पैरेलल फ्लो, ताकि इसके लिए अपनी कंबशन हो, हीट एडिशन हो, इसके लिए अपनी हीट एडिशन हो, एंड वी आर टेकिंग द सेम ब्लीड, the same compressed air from the compressor. So इसलिए जो है ना इसको parallel flow unit कहते हैं, right? समझ आ गई? Okay, then after that we have actually this modification to the basic cycle. If you remember, we discussed about this thing that if you run the basically your non-isentropic expansion process. So if you use that cycle, that is basically giving you that low efficiency. Okay, and at the same time it will give you the low work ratio. Okay, so I should tell you that here the two performance evaluators are the efficiency and the work रेशो. एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास इफिशिएंसी क्या है और वर्क रेशो जो है ना वो हमारे पास क्या है. ठीक है, तो if you
want to increase the efficiency and the work ratio, and the work about. Right. So जी आवाज आ रही है मेरी? ये सर अभी आ रही है? जी सर अभी आ गई। क्वेश्चन Okay. पढ़ रहे थे उस टाइम नहीं आ रही। ठीक है, वो मैंने खुद म्यूट किया था. Okay, so I was telling you that before discussing those modification to the basic cycle, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख लें कि they have actually drawn two, they plotted two figures that is actually plotting the cycle efficiency against pressure ratio for different or for various max. सर आवाज नहीं आ रही। हेलो नहीं है कि आपके पास, let's say for example if you have 780 Kelvin as your maximum temperature for the gas turbine engine, so all the pressure ratios will give you the maximum efficiency. There is a specific pressure ratio, let's say for example for this case it may be 6 or 6.5 or let's say 7 is your pressure ratio which will give you the maximum cycle efficiency, as this is the case for 1100 Kelvin, right? So for each and every maximum temperature of the cycle, there is a specific pressure ratio which can give you the maximum efficiency, right? And same is the case for the work ratio also. ये भी observe किया गया है कि for the work ratio, like for example, if you look at this 780 Kelvin maximum temperature, so not for all pressure ratios, but for pressure ratio, let's say 4 or 3, okay, it will give you the maximum work ratio. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, we actually by pressure ratio we mean this thing, right? ये आपके पास P2 है, ये आपके पास P1 है. We are talking about the overall pressure ratio, remember? ठीक है, ये intermediate pressure ratios भी होती हैं. You are not talking about this. Let's say ये आपके पास P2 है ना, and this is your P1, this is your P3. We are not talking about these individual pressure ratios, but by pressure ratio actually we mean P2 by P1. So for each and every maximum temperature, there is a specific pressure ratio which will give you the maximum efficiency and maximum work ratio. ठीक है, and ये थोड़ा सा जो है ना इसको experimentally देखा गया है, observe किया गया है. ठीक है, okay. Now after that, जी सर ये ग्राफ दोबारा थोड़ा समझा दें, आपकी आवाज चली गई। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये दो ग्राफ्स हैं जो कि बता रहे हैं कि भाई आपके पास अगर एक खास मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर होता है ना हर एक के लिए, चाहे आप कोई भी सिस्टम ले लें, आगे हम डिस्कस करेंगे. विल बी हैविंग 2 कंप्रेसर, 2 टरबाइन, 2 कंबशन चेंबर्स, राइट? एंड वी विल आल्सो बी हैविंग मॉडिफाइड साइकिल, उसमें भी आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर होगा. एंड इफ यू लुक एट द वेरी बेसिक साइकिल, ठीक है, बल्कि चलिए ये साइकिल आप ले लें, इसमें आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? दिस इज T3. ठीक है, पीछे चले जाएं तो किसी जगह ये आपके पास P3 है. So this is basically maximum temperature for this particular engine and this particular operation process flow. कहता है कि इस मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए हर प्रेशर रेशो जो है ना आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम वर्क रेशो नहीं देगा, बल्कि देयर इज अ स्पेसिफिक प्रेशर रेशो, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक maximum temperature which will give you the maximum efficiency
and similarly the maximum work ratio. Like ये मतलब generally हमारे जहन में आता है कि the more the air is compressed and it is combusted, the more will be the enthalpy introduced and the more will be the work produced, but it is not the case. ठीक है, तो इसलिए जो है ना, it is experimentally observed that you know for each and every maximum temperature there is a specific pressure ratio जो कि आपको maximum efficiency भी देगा और maximum, जैसे अगर if you increase the maximum temperature from 780 Kelvin to 1100 Kelvin, ठीक है, तो यही आपको maximum value नहीं दे रहा, ठीक है, जो प्रेशर रेशो पहले हमने यूज किया था, बल्कि somehow maybe here, ठीक है, आपको ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, समवेयर हियर। तो ये जो है ना यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है इन दो ग्राफ्स में। दिस इज अबाउट साइकिल एफिशिएंसी एंड दिस इज अबाउट द वर्क रेशो, ठीक है। यस सर। Okay, then after that I was telling you that we need to modify the basic Brayton cycle in order to increase two things. Those are performance evaluators, ठीक है। एक जो है ना आपके पास क्या है, efficiency, and the second one is your work ratio, ठीक है। अच्छा, what are those modifications? ये subsequent slides में बड़ा डिटेल से है, मैं समराइज करके आपको बताता हूँ। The first modification is your intercooling. The second one is reheating, and that reheating is between turbine stages. Reheating हमेशा turbine stages के दरमियान होती है, intercooling between compressor stages, and the third one is use of heat exchanger, HE for heat exchanger, ठीक है। So if you do these three modification to the basic Brayton cycle, you will practically see that efficiency will increase as well as the work ratio will increase, and these two are the performance evaluator. So you can say that overall performance of the gas turbine engine will increase. Okay, then there is also another thing that it is maybe somewhere written here also in this paragraph, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, put किया है कि if you are using you know simply an intercooling process, ठीक है, या फिर आप रीहीटिंग यूज करते हैं, ठीक है, तो इस सेंटेंस को सुने, अच्छा, इसको हम वैलिडेट करेंगे। इफ यू आर alonely using this intercooling or reheating process and not using heat exchanger, so yes, you will see that your work ratio is increased but the efficiency will decrease, ठीक है। So for that reason it is recommended that you need to use intercooling, reheating and heat exchanger at the same time in order to increase both of the performance evaluators. इस बात की समझ आ गई आपको? ये सिर्फ अगर आप इंटरकूलिंग और रीहीटिंग को यूज करते हैं ना, तो मैं टीएस डायग्राम से आपको बताऊंगा कि आप वर्क रेशो को तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एट द सेम टाइम अगर हीट एक्सचेंजर को यूज नहीं कर रहे तो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आपने दोनों को इंक्रीज करना है ना या मैक्सिमाइज करना है, सो यू नीड टू यूज दीज थ्री मॉडिफिकेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। इसको हम वैलिडेट करेंगे, राइट। हेलो। Cooling, so here at state 1 it comes, let's say for example here we are having T1 and P1, yes सर ये इंटरकूलिंग की आवाज नहीं आ रही थी सर, इसमें इंटरकूल की आवाज नहीं आती, अभी आ रही है? यस सर, अभी चलेगी सर आपकी आवाज। मैं रिपीट कर लेता हूं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दैट दिस इंटरकूलिंग इज बिटवीन कंप्रेसर स्टेजेस, ठीक है। ये दो स्टेजेस हैं कंप्रेसर की, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर, एंड इंटरकूलर इज बिटवीन दीस टू, राइट। तो air enters the low pressure compressor at T1 and P1 and it leaves the compressor at T2 and P2, right? Instead of giving this air, compressed air directly to high pressure compressor, ठीक है, हम क्या करते हैं, we are you know passing it through the intercooler. Intercooler क्या होता है, ये आइडियली कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है ना कूलिंग प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। वैसे कांस्टेंट प्रेशर नहीं हो सकता, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, देयर आर प्रेशर लॉसेस इन द डक्ट, बट एनीवे यू कैन कंसीडर हियर
that we can neglect those losses, and you can say that constant pressure intercooling process takes place in the intercooler. What do you mean by this? This means that here you have T2 and P2. Here you will be having what? T3 and P3. Okay, since we are considering that this is constant pressure intercooling process, so we say that P2 and P3 they are the same. P2 and P3 they are the same at constant pressure. ये आपको TS diagram के ऊपर भी नजर आ रहा है. अच्छा, ये आपके पास ये what is this? This is your P2, P3. This is your P2. They are the same on the same line. ठीक है, इसलिए जो है ना constant pressure. हाँ, दूसरा जो आपके पास this T2, ठीक है, जिससे T3 बना है, this T2 that is now equal to T3, and if you have perfect intercooling process, this will be equal to T1. ठीक है, तो यहाँ पे TS diagram में भी आप देख सकते हैं 1 to 2 is your compression process in the low pressure compressor, then 2 to 3 is constant pressure intercooling process or constant pressure cooling process. ठीक है, constant pressure के ऊपर ये cooling process होती है. Okay, now here you can see that this is your T1 and this is your T3. Okay, so this is your T3. So you can see that if you have perfect intercooling, जो कि possible नहीं होता, but if you have that, उसके करीब करीब हम कर सकते हैं. It depends on how efficient intercooler is. But you can see that your T1 and T3 they will be the same. Okay, what is T1? That is the temperature of the air. Okay, at the entry to this low pressure compressor, and T3 is the temperature of the air to the at the entry to the high pressure compressor, and both are the same. इसीलिए जो है ना इसको हम intercooling, ये intercooling यहाँ से इस तरह होती है. For perfect intercooling, these temperature should be the same. ठीक है, तो आपने जो है, if you remember, मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि in the compressor the pressure is increased from P1 to P2. That is the requirement. But undue, the temperature also increases from T1 to T2. Now, how to reduce that temperature? We actually, in this use the intercooler. Okay. Sir, आज जो है ना आपके पास क्या है कि we have 4 to 5 is heat addition in the combustion chamber. पास क्या है कि this 1 to 2 is this constant pressure cooling process in the intercooler. 3 to 4 is the compression process in the high pressure compressor, and 4 to 5 is what is heat addition in the combustion chamber, and 5 to 6 is expansion process, and 6 to 1 is again the heat rejection process. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो this is actually the idea of intercooling. Now I told you that if you use the intercooler you can increase the work ratio, but आपके पास क्या होगा कि efficiency जो है वो decrease होगी. ठीक है, now you can validate that. कैसे आप validate कर सकते हैं कि you see यहाँ पे है what is the work consumed by the compressor, low pressure compressor. ठीक है, low pressure compressor कितना work consume करता है? That is your CP what T2 minus T1. This is the work consumed by the low pressure compressor. The work consumed by high pressure compressor is what? Is your CP, that is your T4 minus T3. T4 minus T3 आगे है slides के ऊपर. So the total work consumed by the compressor when the intercooling process is there, let's say इनको हम कहते हैं W1. The work consumed by both of the compressors when the process of intercooling is there. ठीक है, इसको हम W1 कहते हैं. If you are not using this intercooler at all, ठीक है, so फिर आपके पास क्या होगा? 1 to 2 will be the work consumed by low pressure compressor, and this 2 to A like CP TA minus T2, this will be the work consumed by the high pressure compressor. Or if you are using a single compressor, so 1 to A will be directly the work consumed by this compression process. ठीक है, so you see here, let's say this work without intercooler is denoted by W2. ठीक है, so this W2 is greater than W1. Why?
you can visually see, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, if you add this line, the length of this plus length of this, that will be less than this length. ये तो आप विजुअली भी देख सकते हैं। लेकिन इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल शुरू में मैं आपको बताया था कि दिस कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ठीक है, सुपर हीटेड रीजन में ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है ना, दीज टू, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, दे आर नॉट पैरेलल, ये डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं, इस तरह डाइवर्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली डाइवर्जिंग का क्या मतलब है कि ये लाइन लेंथ में जो है ना कम होगी, इससे ऊपर वाली बड़ी होगी, इससे ऊपर वाली उससे बड़ी होगी, इससे ऊपर वाली उससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्क कम है इससे, एंड दिस इज लेस देन दिस वन, एंड दिस इज लेस देन दिस वन। So the same argument you can give कि भाई आपके पास the work consumed by both of the compressor in the process of intercooling is there is less than, I can say this is less than W2 without intercooler, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि work consumption of the compressor आपने क्या की, reduce की, ठीक है। So work ratio का formula क्या है, that is your work of the turbine minus work of the compressor divided by work of the turbine। work of the turbine constant है, ठीक है, दोनों केसेस में, that is your H5 minus H6, that's it। तो work of the turbine अगर आप constant ले लें and work is reduced in case of intercooling process, तो you can see that ये इसकी reduction की वजह से आपके पास ये numerator जो है वो increase होगा and the work ratio will be increased, ठीक है। ये एक आपके पास validation है। Second thing is कि आपके पास जो efficiency है वो decrease होगी, and the reason is there, okay। and if you are not using the intercooler, so you are basically adding this much heat, which is you can see it is less than, ये आपके पास Cp T5 minus Ta होगा, ठीक है। so this heat supply, I should say this is heat supply 2 and this is heat supply 1, this heat supply 2 is less than heat supply 1। so you can see that कि आपके पास जो efficiency है that is your network output divided by heat supply। ये आगे स्लाइड्स में है, अच्छा इसलिए मैं इसको तेज कर रहा सर हूँ जी। सर ये एक मिनट, दोबारा बताइए। इसको मैं कंप्लीट करूँ, अच्छा। तो हीट सप्लाई ओके जो है इन केस ऑफ विदाउट इंटरकूलिंग प्रोसेस ये कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी। एंड इफ यू आर यूजिंग द इंटरकूलिंग प्रोसेस तो हीट सप्लाई आपने बढ़ा दी ना, ठीक है, ये हीट सप्लाई जो है ना आपने बढ़ा दी, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली यूर दिस थिंग। तो हीट सप्लाई के बढ़ने के साथ आपके पास क्या होगा, you have increased the heat supply for the same network output, so for that reason this efficiency will decrease। so by introducing the idea of only
हेलो। ये सबको आवाज नहीं आ रही है। सर है नहीं तो आवाज किस तरह आएगी? वाजिद वाजिद हाँ जी जी सर तो वो रिकॉर्डेड जी। लेक्चर है अपलोड किसको सर को कह देना कि रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दे फिर। यार सर से तो मैं बार बार कहता हूँ, वो जब अपलोड भी करते तो संडे की रात को अपलोड करते, बहुत लेट अपलोड करती है। बस जब भी करे बस कह देना بس سر تخام خوي بليز سيو ذو قرآن بدنا ودش من بس سر تمام هو ياتري बस ठीक था, ओके। उसको मुंस टाइम है उस संजय देखिए। हेलो। जी सर। मेरे ख्याल में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने तो इतना बोला है कि कहाँ तक आपके आपको पास समझ आई है? बार सर बार हम कट रही। अच्छा, आप बता दिया करें ना किसी तरीके से, ताकि फिर मुझे। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही यस है। सर, अभी आ रही है। ओके। चलिए थोड़ा एक स्लाइड हम पीछे चले जाते हैं। वैसे ये रिकॉर्डिंग में होगा आपके पास। तो ये रीहीटर का प्रोसेस समझ आ गया आपको कि नहीं? सर हम इंटरकूलर में थे, वहाँ पर हम एफिशिएंसी पढ़ रहे थे कि नेटवर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाई, वहाँ पर कट गया सर आवाज। ये तो मैंने बहुत कुछ बोला यार। अच्छा एनीवे, अच्छा चलिए इस तरह करते हैं कि लेट अस टेक 5 मिनट ब्रेक। मैं थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करता हूं ताकि जो है ना ये सिग्नल कंप्लीट हमारे पास आए, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू फिनिश अप विद दिस चैप्टर टुडे। थोड़ा सा काम रहता है, उसको हम लोग यस फिनिश करते हैं। तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। लेट मी गो ओके अपस्टेयर्स सर। ताकि सिग्नल जो है ना कंप्लीट आ जाए, ठीक है।
सर से किसी का राब्ता हुआ है? क्या बोल रहे हैं नादिर? मैं पूछ रहा हूँ कि सर से किसी का राब्ता हुआ है कि वो कहाँ चले गए? सर ने खुद बात की है अभी। 5 मिनट की ब्रेक ले लिया, 5 मिनट 5 की मिनट ब्रेक ले ब्रेक लिया, ले जा लिया। रहे हैं अभी शायद। जी अभी मेरी जी am I audible now? यस सर। Okay, यस। let me share the screen again. But so we were discussing about so I was telling you that when you are discussing about intercooling process, then we about a single this turbine and two compressors. Okay, just and when you are talking about reheating process, then we take a single compressor into consideration and we talk about two turbines just for simplicity. It's some we'll be having a comprehensive diagram, flow diagram, where we will be having two compressor, two combustion chamber, and two turbines, along with intercooling, reheating, and heat exchanging process. Okay, just जिस चीज को करते हैं तो बाकी को जो है ना हम सिंपल लेते हैं, तो ये इसलिए जो है ना हमारे पास ये है. Anyway, reheating is between turbine stages. Okay, so if you look at the flow diagram, so the air at state 2, it is then given to combustion chamber 1 and the enthalpy is increased and is enthalpy high pressure turbine and you are getting the work. Okay, so if you look at this TS diagram, 1 to 2 is the work, the constant this compression process in the compressor. 2 to 3 is a heat addition process, okay, in the combustion chamber 1 CC1. 3 to 4 is expansion process in this high pressure turbine. That's it. Then after that, uh, instead of giving this exhaust, that is T4, directly to the low pressure turbine, that was the case in previous slides, we are reheating it. By reheating, actually, we mean we are passing it through another combustion chamber, that is your combustion chamber 2. Okay? So you can see here that we are not directly expanding it in the this low pressure turbine. ठीक है, जिस तरह ये केस है, but we are reheating it to temperature T5. इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं. ठीक है, and you know very well that your work is what, that is your CP of gas. This is temperature, maximum temperature minus this minimum temperature, maximum minus max minus min, जो कि इस केस में आपके पास क्या है, दिस if you are not using the reheat, this will be your CP, this is your T4 minus TA, so you have actually increased this T4. ठीक है, ये T4 जो है ना आपने क्या है, इसने इंक्रीज किया है T5, right? So by increasing the temperature from T4 to T5, you have basically increased the enthalpy, and the enthalpy drop जो आपके पास है ना वो फिर ज्यादा. From there we are expanding it in the low pressure turbine in order to get this network output. ठीक है, तो you can see here कि आपके पास जो वर्क रेशियो है वो इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वर्क ऑफ द टर्बाइन जो है ना वो इंक्रीज हुआ है. Previously, if you are not using the combustion chamber and directly expanding the exhaust of this high pressure turbine directly into the low pressure turbine, तो आपके पास क्या है, this is the work produced.
ठीक है। एंड नाउ दिस इज द यूज्ड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि दिस वर्क W1 इज लेस देन दिस वर्क W2, और रीजन फिर मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली दे आर इन डाइवर्जिंग इन नेचर। तो इसलिए जो है ना आपने वर्क आउटपुट को इंक्रीज किया है, तो वर्क रेशो आपके पास क्या होगा, फार्मूले में अगर आप देखें तो वर्क रेशो जो है ना वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अ लिटिल बिट, बट एट द सेम टाइम द एफिशिएंसी इज डिक्रीज। और क्यों डिक्रीज होगी, इफ यू सी इन द प्रीवियस डायग्राम, तो यहाँ पे एफिशिएंसी वर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एडिंग हीट टू द सिस्टम। तो हीट सप्लाई आपके पास इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे आपके पास क्या है, यू आर बेसिकली लूजिंग मोर हीट, ठीक है। तो ये लेट्स से इफ यू लुक एट दिस वन, इफ यू आर नॉट यूजिंग द आइडिया ऑफ रीहीटर, तो आपके पास एग्जॉस्ट टेम्परेचर क्या था, दैट वुड बी TA। समझ आ गई बात की। नाउ सिंस यू हैव रीहीटेड, योर एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज योर T6 more than TA। मतलब ये है कि you are losing the exhaust that is having more temperature than this one. You basically lose in case of heat. Yes, you have the work of the turbine, at the same time you are losing more heat, and that loss of heat is basically reason for this efficiency decrement, ठीक है। तो अगेन जो बात मैंने आपको बताई थी कि if you are using reheater or intercooler, so you can increase the work ratio, but at the same time the efficiency will decrease. Now if ये ना इस यही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बताई है, TA minus T6 क्या है खुद से फिर देख लें। This is actually the black and white of what we orally discussed, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, जस्ट जो है वर्क होगा और आपके efficiency है वो increase होगी। Important modification to the basic cycle is the use of heat exchanger, right? Heat exchanger basically क्या है कि this is a compression process in the compressor, right? And give it to the combustion chamber, we are through the heat exchanger. अब heat exchanger क्या है and how this heat exchanger is useful and effective, you can see here, यहाँ पे जो है ना आपके पास temperature 5, ठीक है। If your T5 is greater than your T2, ठीक है, ये T2 से जो है ना बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि you are basically losing this heat. So why not to utilize this heat, recover this heat? तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये since this T5 is greater than this T2, तो heat exchanges and the heat exchange takes place, और आपके पास जो हाई ग्रेड जो हीट का ग्रेडियंट है टेम्परेचर से तरफ आता है, ठीक है, लो टेम्परेचर। तो आपके पास this one 1 to 2 is compression in the compressor, 2 to 3 is heat addition, ये जो 2 to 3 है heat addition, but not in the conventional chamber where fuel is sprayed over here, but this increase in the temperature is purely due to exchange of the heat from, ठीक है। तो ये जो आपके पास हीट एडिशन है ना, आप समझ लें कि ये बिल्कुल फ्री में आपको मिल गई है। तो इसलिए जो है द एडिशन ऑफ हीट, आप उसके बाद जो है ना दिस इज गिवन and heat is added and then again it is extended, okay, in the turbine and the work is produced here. So you can see that you are using this idea, तो आप जो है ना you are just adding this heat, so the heat supply is reduced by introducing the idea of heat exchanger. So the heat supply is reduced. This means what? This means that the heat supply, अगर आपके पास this work net है and heat supply, ठीक, तो efficiency आपके पास ये है, heat supply अगर reduce हो गई है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास efficiency जो है वो
ठीक है, you can increase the सर आपकी आवाज with that बहुत कट कट this one कट आ रही है। जी सर, समझ नहीं आ रही बात की। यस सर। एक मिनट। जी, अभी आवाज कैसी आ रही है? जी सर ठीक है अभी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो है यूज ऑफ हीट इस एक और तरीके से हम समझ लेते हैं कि let's say for example at state 2 you are having the compressed air temperature, let's say for example is 200 degrees C for example, and, to have a specific net power output you need this maximum or somehow see 400 चाहिए। सर अगेन कट रही है। एक तरीका तो ये सर आवाज फिर कट रही है। आवाज कट रही है। आ रही है कि कट रही है सर आवाज। अच्छा, चलिए फिर थोड़ा सा आप वेट कर लेते हैं ताकि सिग्नल स्टेबल हो जाए। आई डोंट नो, अब मुझे बता दें जब मेरी आवाज आपको सही आ रही हो ताकि मैं कंटिन्यू करूं। सर अभी सही है, लेकिन जब लेक्चर शुरू कर दे तो फिर सर फिर से कट हो रही होती। अच्छा, मैं तो बिल्कुल टॉप रूफ, तो आई डोंट नो सिग्नल्स आर कंप्लीट बट एनीवे मे बी हैविंग सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। तो अच्छा चले इसको करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो आई वाज टेलिंग यू कि द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मैक्सिमम टेम्परेचर इज 400 डिग्री सी। ठीक, आपको 400 डिग्री सी चाहिए, ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंड द रिक्वायर्ड नेट पावर आउटपुट। ठीक है, अब इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं? First thing is that you are not using the idea of heat exchanger and directly adding heat to the compressor in order to elevate the temperature, let's say from 200 to 400। तो आप इतना हीट जो है ना ऐड करेंगे, कंबशन करेंगे, ठीक है, कितना, बल्कि इसको अगर मैं 100 ले लूं तो अच्छा होगा, इट इज नॉट रियलिस्टिक, दिस इज लेट्स से। So you need to add, in order to get this 400 maximum temperature, you need to add such amount of heat so that it can increase the temperature of this compressed air from 100 degree C to 400 degree C। तो 300 जो है ना आप इतना हीट ऐड करेंगे, ठीक है, तो right, but if you use this heat exchanger, तो heat exchanger बेसिकली आपके पास क्या करता है कि 100 डिग्री सी ये है ना, यहाँ पे दिस लाइन, ठीक है, वो एक्सचेंज होती है और होती है टू दिस कंप्रेस्ड एयर। तो यहाँ जो T3 है ना, T3 दैट इज मे बी समहाउ लेट्स से 200 डिग्री सी, ठीक है, एंड नाउ यू नीड टू एड 400 माइनस 200, कितना आपने हीट एड होगा ताकि 200 बढ़े और ये 400 तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये है यू हैव बेसिकली बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ दिस, तो आपके पास क्या है, एफिशिएंसी इज योर नेटवर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड जो है ना आपने क्या की है 300 से थ्रू, इट मींस यू हैव हीट सप्लाई, तो आपके पास जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 to 2 is you know compression process, is heat addition but not utilizing the fuel, okay, utilizing this exhaust air, that's
and you have basically this 3 to 4 is heat addition in the combustion chamber. So the heat supply is decreased. As a result, this efficiency is also increased. So this way, if you look at this, ये यहाँ पे यही चीजें बताई गई हैं. अच्छा, एक और चीज है इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर. इफेक्टिवनेस बेसिकली क्या चीज है कि justify heat exchanger on this thing, right? कि आपके पास ये जो T5 है, T5 they should very much great. अगर ये केस है तो तब जो है ना आप हीट एक्सचेंजर को यूज करें, वहां पे आपके पास ये इफेक्टिव भी होगा एंड जस्टिफाइड भी होगा. ठीक है, बट इफ दिस T5 somehow is nearly equal to T2, there will be no heat exchange, appreciable heat exchange, right? So it is not justified here, क्योंकि almost cases but ये हो सकता है. ठीक है, एंड दिस विल नॉट बी इफेक्टिव. सो इसलिए जो है ना ये जरूरी है दिस कंडीशन कि आपके पास ये जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर है हॉट लाइन का, दिस शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन दिस वन, तभी आप जो है ना हीट एक्सचेंज होगी. इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस इज बेसिकली हीट रिसीव्ड बाय द एयर. व्हिच एयर? द कंप्रेस्ड एयर एट स्टेट T2. ठीक है, तो कितना हीट रिसीव करता है एयर, एंड व्हाट इज द पॉसिबल हीट व्हिच कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैसेस इन द हीट एक्सचेंजर. यहाँ पे how much this exhaust is having the capability of transferring heat, और यहाँ पे जो है ट्रांसफर. ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशो है ना ये इफेक्टिवनेस ऑफ इस हीट एक्सचेंजर को जाहिर करता है. लेट्स से आइडियली इफ टोटल कहते हैं कि भाई ये जो हीट एक्सचेंजर है दिस इज 100% इफेक्ट. ठीक है, तो ये एक चीज है. उसके बाद जो है ना ये थर्मल रेशो भी वो है कि टेम्परेचर ऑफ द एयर कितना है एंड मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल ये कितना था, ये यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वही चीज है कि दिस T5 minus T2, दिस इज द टेम्परेचर अवेलेबल, टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल है, और T2 से T3 तक चला गया है. ठीक है, ये मैं आपको जो बता रहा था कि कितना जो है पर वो अवेलेबल था. ठीक है, इसको आप कहते हैं. तो ये चीज थोड़ा सा आप देख लें. और ये सप्लाई बाय फ्यूल विदाउट हीट एक्सचेंजर एंड विद हीट एक्सचेंजर है. ठीक है, विद हीट एक्सचेंजर एंड विदाउट हीट एक्सचेंजर. ये आगे जो है ना जाके इसी एफिशिएंसी की ओरली हमने this much and with heat exchanger is heat exchanger this is less and with heat supply जो है ना आपके पास कम है तो efficiency जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे डिस्कस किया गया है. यहाँ तक आपको समझ आ गई? हाँ जी, आर यू देयर? Yes sir, yes sir. Okay, then after that there are two examples, example 9.4 and 9.5 solved example है आप ही की बुक में, तो उसको जो है ना फिर आप कर लेंगे. आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स. ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि ये थोड़ा सा लेंथी है ये एग्जांपल, नॉट कॉम्प्लेक्स. इफ यू रिमेंबर बिल्कुल शुरू में मैं आपको बताया था क्यों लेंथी है. यू कैन सी टू कंप्रेसर्स एंड टू, ये मैं आपको बता. ठीक है, इंटरकूलर बिटवीन कंप्रेसर स्टेजेस, रीहीटर बिटवीन टरबाइन स्टेजेस एंड यूज ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर. So these three are the modification at the same time work as well as the efficiency. ठीक है, लेंथी क्यों है? लेंथी इसलिए है कि बाकी जो फार्मूले है ना दे आर व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? साइकिल एफिशिएंसी. इसका फार्मूला आपके पास है. द वर्क रेशो, यू कैन फाइंड आउट दिस वर्क रेशो आल्सो, एंड द मास फ्लो रेट, इसका फार्मूला भी है. बाकी सारी चीजें आपको गिवन है. इसमें क्या होगा आपके पास कि यू नीड टू फाइंड आउट ऑल द टेम्परेचर एट ऑल द स्टेटस. तो कुछ आपको गिवन होंगी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 and T10. All basically the temperature which are actually shown here on the diagram are okay. So 1 to 2 to 3 to 4 it's the difference जो है ना
पता होनी चाहिए। कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे? ये शॉर्ट एग्जांपल है, जनरली मैं आपको बताता हूँ यूजिंग द आइडिया ऑफ तो आपको गिवन होंगी। तो दो चीजें, एक तो आपके पास जो कंप्रेसर्स है ना, इनकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज आपको गिवन होंगी, टर्बाइंस की एफिशिएंसीज आपको गिवन होंगी, ठीक है। तो उनसे जो एंड सिमिलरली प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात जब हम करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट you know you can really for pressure ratios to pressure ratio में हमने किए थे, आप फाइंड आउट करेंगे and slowly and gradually you can find out all these temperature and whatever you want you can find out using very those empirical formulas, ठीक है। ये जो है ना आप खुद से सॉल्व करने, ये बता रहा है एग्जांपल 9.4 में कि यू कैन निग्लेक्ट ऑल द प्रेशर लॉसेस। प्रेशर लॉसेस कहाँ पे है? ये टर्बाइंस में होती है, और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस जो है ना ये कंबशन चेंबर में होती है। तो यू कैन नेग्लेक्ट ऑल दीज लॉसेस एंड यू नीड टू फाइंड आउट दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। तो ये आपके पास इसके आंसर्स आएंगी, आप खुद कर लें, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके पास ये जो एग्जांपल 9.5 है, यहाँ हम लॉसेस को करते हैं कि मतलब आपके पास एग्जॉस्ट है, उसमें लॉसेस कितनी है, प्रेशर लॉसेस, अच्छा इन बार्स, इंटरकूलर में कितनी लॉसेस हैं, ठीक है, कंबशन चेंबर, इस तरह ये सारे लॉसेस को कंसीडर करते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ठीक है, वी आर बेसिकली हैविंग अ ब्रेक बिटवीन दीस टू, ये बेसिकली लॉसेस हैं। हम कहते हैं ना कि भाई हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन होती है, राइट। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, बल्कि यू कैन सी देयर इज अ प्रेशर लॉस, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लॉस है छोटा सा, सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर लॉस है यहाँ पे। तो ये सारे लॉसेस जो है ना इसने कंसिडर किए हैं, ठीक है। और यूजिंग द रिजल्ट्स एंड द गिवन डेटा ऑफ एग्जांपल 9.4, इसने वही जो आपके पास एफिशिएंसी है, वर्क रेशियो है और मास फ्लो रेट है वो फाइंड आउट किया है, ठीक है। एंड यू विल सी दैट कि इन दोनों में जो है ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तभी आप अगर प्रॉब्लम्स वगैरह को देखें तो लॉसेस, प्रेशर लॉसेस जो है इनसाइड द डक्ट्स, ठीक है, और जो आपके पास हीट एक्सचेंजर है वहां पे किया जाता है। एंड दिस एग्जांपल इज बेसिकली द वैलिडेशन ऑफ कि क्यों जो है ना हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी समझ आ गई आपको तो दिस इज एक्चुअली द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर एंड दैट इज अबाउट, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर के एंड में पास प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम 9.1 टू 9.9, इसको जो है ना आपने हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तकरीबन इसी तरीके से है जो कि एक दो चार प्रॉब्लम हमने किए हैं। एग्जांपल्स अगर आप सारे कर लें तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट 1 or 2, द अदर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। As far as this statement is concerned, so what you need to do is a reading assignment है on combustion in the context of gas turbine power plant. At the end of this chapter in the book of M.S.K, you are having a couple of pages. You need to read those pages, ठीक है। And what those pages are about the combustion, ठीक है। Generally मैं आपको बता देता हूँ। If you remember, we talked about the compressors, their isentropic efficiencies and a lot. We talked about turbines, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन we talked about turbines a little bit, but we didn't talk about this combustion, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कि combustion का प्रोसेस किस तरह होता है, ये आप रीडिंग असाइनमेंट है आपके लिए। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ combustion chamber। अच्छा, combustion in the context of gas turbine power plant, ठीक है, नॉट combustion पूरा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो सिर्फ आपने इसको इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट इसको बताना है कि भाई पावर प्लांट में किस किस्म के कंबस्टर्स यूज होते हैं, केन टाइप है, एनुलर टाइप है, काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास होती है कंबशन चैम्बर में किस तरीके से होती है, फ्यूल कैसे स्प्रे होता है, ठीक है, इन द नोजल, ठीक है, व्हाट आर द रिच नोजल्स जिसमें ये चीजें जो है ना वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। दिस इज अ रीडिंग असाइनमेंट फॉर यू। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, तो आप जो है ना इसको कर लें। एंड विद दीज थिंग्स वी कैन कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर एंड सिमिलरली चैप्टर 9 फ्रॉम द बुक यू आर रीडिंग दिस लेक्चर आल्सो। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है।
सर आप सर रिकॉर्डिंग अगर ये किसी ऐसी क्लास रिकॉर्डिंग पे बहुत अपलोड कर लेट दें अपलोड जिसमें होती है आप सर। नेट पे सुनाओ। ठीक है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप जो है ना पूछ सकते हैं डिफरेंट मीडियाज के ऊपर, राइट। सो चलिए हम क्विट करते हैं इंशाल्लाह, वी विल मीट नेक्स्ट वीक, राइट। ओके। ओके।